I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Chief Minister. Thiru C. Joseph Vijay Avargal. C. Joseph Vijay enum naan অবশেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া থালাপতি বিজয়। আর দায়িত্ব নিয়েই দিলেন তিনটি বড় প্রতিশ্রুতি। விளாத்திக்குளம் பக்கத்துல +2 படிக்கிற ஒரு பொண்ணு டாய்லெட் வசதி சரியா இல்லாம ஒரு அவசரத்துக்கு காட்டு பக்கம் போய் ஒதுங்கினாங்களே, என்னாச்சு? இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டாங்க, அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? অবশেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া থালাপতি বিজয়। আর দায়িত্ব নিয়েই দিলেন তিনটি বড় প্রতিশ্রুতি। শপথ গ্রহণের পরপরই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নথিতে স্বাক্ষর করেন বিজয়। প্রথম সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম গৃহস্থলী গ্রাহকদের জন্য 200 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা চালু করা। এছাড়া নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী গঠন এবং রাজ্য জুড়ে মাদক পাচার বিরোধী বিশেষ ইউনিট তৈরির সিদ্ধান্তেও অনুমোদন দেয় বিজয়। மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। শপথ অনুষ্ঠানের পর দেয়া প্রথম ভাষণে বিজয় বলেন, আজ থেকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক নতুন যুগ শুরু হলো। নতুন সরকার গঠনের সমর্থন দেওয়ার জন্য কংগ্রেস, ভিসিকে, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ এবং বাম দলগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান থালাপতি বিজয়। তরুণ ভোটারদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজয় বলেন, তরুণদের কারণেই টিভিকে জয় পেয়েছে। তারাই পরিবারের সদস্যদের আমাদের পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে। বিজয় মামা বলে তাকে সমর্থন জানানো তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, আমি কোনো ত্রাণকর্তা নই, আমি একজন সাধারণ মানুষ যে সাধারণ জীবনই যাপন করে। নিজের সংগ্রামের কথাও তুলে ধরেন তামিলনাড়ুর এই নতুন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, একজন সহকারী পরিচালকের ছেলে আমি। দারিদ্র্য আর ক্ষুধা কি জিনিস আমি খুব ভালো করেই জানি। আমি কোনো রাজকীয় পরিবার থেকে আসিনি। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு উறுதிমொழிகிறேன்। বিজয়ের দাবি, তামিলনাড়ুর আর্থিক অবস্থা এখন সংকটপূর্ণ। রাজ্যের ঋণের পরিমাণ 10 লাখ কোটি রুপির বেশি এবং সরকারি কোষাগার প্রায় খালি। এই পরিস্থিতি তুলে ধরতে খুব শীঘ্রই একটি হোয়াইট পেপার প্রকাশের ঘোষণাও দেন তিনি। প্রথম ভাষণে নারী নিরাপত্তা, মাদক বিরোধী অভিযান এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও দেন বিজয়। তবে সবচেয়ে আলোচনায় এসেছে গৃহস্থলী গ্রাহকদের জন্য 200 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা চালু করার ঘোষণা। We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate Thiru C. Joseph Vijay. ভাষণের শেষে তামিলনাড়ুর মানুষের উদ্দেশ্যে নতুন এই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন এক শাসন ব্যবস্থা এবং নতুন সূচনার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।